Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Rapid Revision. This video is about partnerships, and partnerships is like a whole chapter in accounting O levels. There are two additional things that the students must know. So there's income statement and statement of financial position for a normal sole trader as well, and there are two accounts which are very important. One is the partnership appropriation account, and the other one is partnership current account. And there are then a lot of theory questions also that come in partnership chapter. So the partnership is basically a business which has 2 to 20 partners. So 2 to 20 owners can own a partnership. Usually in accounting O levels, you will have only two partners who are actually doing that business, usually, because in the past papers you will see most questions are based on two partners only. But yes, in A level accounting there are three partners in certain questions, but not more than three in any of the questions. So a partnership is a business in which two or more people work together as owners with a view of making profit. Normally, with a view of making profits, normally there cannot be more than 20 partners in a business. Okay, so usually, accountants can have a partnership business. Similarly, lawyers can usually have a partnership business. Sometimes, some family businesses are also run as a partnership. So a partnership would also maintain double entry records just as the way of sole trader, but there will be an extra account called the profit and loss appropriation account in the case of partnership after the income statement is prepared. So you guys must know that sole trader income statement and partnership income statement is just the same. ठीक है, तो अगर आपको सोल ट्रेडर की आती है तो आपको पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट भी आती है, बिकॉज दोनों इनकम स्टेटमेंट सेम होती है. ठीक है. द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन द पास्ट पेपर्स. They have asked you advantages and disadvantages of a partnership, and sometimes if there is a question जिसमें sole trader है already और उसको partnership business banana hai, and if there is a decision related to that, so let's say there is some one person and he's thinking of also inviting other person as a partner, तो उसमें भी वो आपसे यही evaluation में पूछ रहे होते हैं आंसर के अंदर कि उसको फायदा है या नहीं है from moving from a sole trader to partnership. So what are the advantages? So a sole trader is a single owner, a partnership is a multiple owner businesses. So obviously there will be more capital that will be available, additional knowledge. So सबकी अपनी expertise होती है, तो कभी कभी when you are inviting someone else as a partner also, तो उनकी अपनी expertise भी वो लेके आएंगे, and obviously that they will be able to contribute that to your partnership business. Responsibilities will be shared, risk will be shared, losses will be shared, discussions can take place before decisions are taken. Disadvantages क्या है? Profits will have to be shared, ठीक है, and then decisions are to be recognized by all partners. So if once a decision is taken, it should be recognized by all the partners. Decisions may take longer to put into effect because there can be disagreements, there can be discussions in which there are disagreements. One partner's actions on behalf of the business are binding on all the partners. तो कोई एक डिसीजन किसी एक पार्टनर की वजह से लिया हो तो उसकी वजह से सारे पार्टनर्स को उस डिसीजन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, even if the consequences are not what we expected, but even then all the partners will have to recognize that as a decision. Disagreements can occur. All partners are responsible for the debts of the business. There's something called unlimited liability. तो पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस भी बैंकरप्ट हो जाता है तो to pay off the liabilities, the owners might have to sell their personal possessions in order to pay off the liabilities of the business. So that is why partnership will also have unlimited liability. Then there is something called partnership agreement, which is also important. Partnership agreement जो है वो एक formal document होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं partnership से related. तो why is it important? ताकि misunderstanding ना हो, ताकि आप future में everything is written and the rules are set before, and if it's in a written form, it's much better, and ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड. तो drawing up an agreement can avoid misunderstandings and arguments later.
अब इन्होंने आगे देखें, आगे हमें बता रहे हैं कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, व्हाट ऑल इज रिटन इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स कितना 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 अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एज कैपिटल, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर होंगे, सो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, so if it's in the ratio of capital invested or if it's in the some if it's in some other ratio, like sometimes it's 3:2, sometimes it is 2:1, depending on the question also। क्वेश्चन में आपको वो सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ होगा, ठीक है। इफ पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी पेड, इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी पेड एंड इफ सो एट व्हाट रेट, तो कितना इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस रादर दैन इन्वेस्टिंग एल्सवेयर। तो कोई और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी उनको इंटरेस्ट अर्न करने को मिलता है, इस वजह से वो पार्टनरशिप में सिंस पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो रिवॉर्ड दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट कैन बी अ फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन टू द पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड मोस्ट कैपिटल। तो फिर जितना ज़्यादा जिसने कैपिटल डाला होगा उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो है वो बेसिकली पार्टनरशिप के प्रॉफिट में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉफिट में से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को। सो प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट, सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो गिवन आउट टू पार्टनर्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। फिर सैलरीज, अगर समटाइम्स देयर आर टू पार्टनर्स देयर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस बट वन ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट वर्क a lot for the partner, sorry, one of the partners does not work a lot for the business, मतलब वो उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, और दूसरा एक बंदा होता है उसके पास अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो फिर उसको सैलरीज भी दी जाती हैं। तो सैलरी कैन बी अ फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन वेयर वन पार्टनर हैज़ अ ग्रेटर शेयर ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जिसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको बेसिकली प्रॉफिट में से जो है वो सैलरी भी दी जाती है। सो आउट ऑफ द प्रॉफिट द सैलरी इज गिवन टू द partner who has more responsibilities, ठीक है। Then there is, if an upper limit is to be placed on partner's drawing and if so what amount। तो drawings जो हैं वो the partnership business would want कि drawings जो हैं वो as low as possible हो। तो वो जो है sometimes they can have an upper limit on the drawings, but I haven't seen any question in the past papers जिसमें कोई upper limit दी हुई हो drawings में। और drawings दी हुई होती हैं बस कितनी drawings की हैं partners ने during the year। अच्छा, if interest on partners drawings is to be charged and if so at what rate। So sometimes partners withdraw a lot of money, so interest is charged to the partners so that partners are discouraged from making drawings from the business, especially early in the financial year, ठीक है। इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होता है? तो इंटरेस्ट उस दिन से कैलकुलेट होता है जिस दिन से पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली हैं, सही है। तो समटाइम्स इन सम क्वेश्चंस इवन इन मई जून 2025 एक क्वेश्चन आया था जिसमें पार्टनर्स ने समवेयर इन बिटवीन या फिर समवेयर 3 महीने पहले, साल के ख़त्म होने के 3 महीने पहले पैसे विड्रॉ किए थे पार्टनरशिप बिजनेस से। तो वो उसमें 3 मंथ्स की इंटरेस्ट चार्ज होती है। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है वो पर एनम इंटरेस्ट दिया हुआ होता है। पर एनम मीन्स पर ईयर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होता है, लेकिन आपको उसको नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई करके हैव टू कैलकुलेट कि कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। समटाइम्स पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है ड्राइंग्स पे, समटाइम्स सिर्फ कुछ महीने का इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑन ड्राइंग्स। Interest on the amount withdrawn is calculated from the date of withdrawal until the end of the financial year. If on partners loans, if interest on partners loans is to be paid and if so at what rate। तो कभी कभी ये होता है कि partner, let's say partner Ahmed and partner Bilal, so partner Ahmed and partner Bilal, these two people, Ahmed and Bilal are in partnership, और अहमद जो है वो पार्टनरशिप को एक लोन भी दे रहा है, सही है। तो जब वो पार्टनरशिप को लोन देगा तो वो जो है वो ऑब्वियसली उसको हमें इंटरेस्ट भी देना चाहिए ना, हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो हम उसको दे रहे हैं दैट विल द इंटरेस्ट, दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंसेस सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट जस्ट द वे इट इज रिकॉर्डेड फॉर अ सोल ट्रेडर, ठीक है। या फिर कोई और अगर बैंक भी हमें लोन दे रहा होता तो हम बैंक को भी इंटरेस्ट देते, and we would have recorded the interest incurred, the interest expense incurred in the expenses section of the income statement, ठीक है। तो इसलिए जो expense incur हो रहा है इंटरेस्ट का,
वो चाहे पार्टनर ने आपको लोन दिया है, चाहे बैंक ने दिया है, चाहे किसी ने भी दिया है, वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हो रहा है दैट इज रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंसेस सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंस. ठीक है. अच्छा, इफ एक्स्ट्रा फाइनेंस इज रिक्वायर्ड अ पार्टनर में मेक अ लोन टू द बिजनेस to compensate for the loss of interest they could otherwise earn interest on loan may be paid. So sometimes वही पार्टनर अगर जो है वो लोन किसी और जगह पे लाइक किसी और को दे देता वो लोन तो उसको इंटरेस्ट मिलता. तो इसीलिए अगर वो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दे रहा है तो हमें भी उसे इंटरेस्ट देना चाहिए एंड इट्स फेयर. ठीक है. ओके, लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, सेम थिंग. अ पार्टनरशिप में बोरो मनी फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर्स if extra finance is required. Loans from partners are not part of the capital of the business again and are treated in the same way as any other loan. Unlike investing additional capital, money lent to a partnership business by a partner will be repaid at an agreed time. इसीलिए वो लोन की उसमें दे रहा है ताकि उसको ताकि उसको एक थोड़े साल के बाद उसको वो पैसे वापस मिल जाएं. इसीलिए वो इन द फॉर्म ऑफ लोन दे रहा है और इसीलिए वो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल नहीं दे रहा, वो इन द फॉर्म ऑफ लोन दे रहा है पार्टनरशिप को वो अमाउंट ऑफ मनी. इंटरेस्ट ऑन लोन is a business expense and is not affected by the amount of profit or loss. Yes, in any case, interest has to be paid. Interest on loan. ठीक है. अच्छा, जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ बात है, जब मैं आपको करंट अकाउंट करंट अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी. जब इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जो बात है, जो हम अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप बिजनेस को, उससे रिलेटेड जो बात है वो आई विल टेल यू व्हेन आई विल मेक द करंट अकाउंट for the partnership, like the current account format, when I'll explain the current account format. लेकिन तब तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है इनकम स्टेटमेंट इज जस्ट द वे द सोल ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. तो ये मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट इधर डाला हुआ है, वो मेरी फॉर्मेट की ई बुक से ही है. And this format is exactly the format for sole traders and partnerships both. And then there is important format particularly for partnerships is appropriation account. तो अहमद एंड बिलाल का बिजनेस है एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वॉट एवर जो भी साल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. अहमद एंड बिलाल मैंने यहाँ नाम दिया हुआ है. आप लोगों के सवालों में ऑब्वियसली डिफरेंट नाम होंगे तो वो नाम के हिसाब से आपको नाम लिखने डिपेंडिंग वॉट एवर नेम्स आर. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट में आया है कैलकुलेट किया हुआ प्रॉफिट फॉर द ईयर. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो प्रॉफिट में ऐड क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो है ये पार्टनर के कैपिटल से, बेसिकली हम पार्टनर के कैपिटल से इसको निकाल के प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं. सही है, क्योंकि हम पार्टनर की बेसिकली कैपिटल को रिड्यूस करके इसको प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं. तो ये जो है ये पार्टनर्स से लिया जाता है, लाइक वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द पार्टनर्स. We are basically charging them interest and we are taking the money of interest. We are basically reducing their capital for this, like because interest on drawings basically is charged to the partners और उससे आप उस अमाउंट से आप पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं. और वो बेसिकली हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, ये जो है ये प्रॉफिट से पार्टनर्स को दिया जाता है. सो वी आर गिविंग इट टू द पार्टनर्स बिकॉज दिस इज द रिवॉर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. तो हम अहमद को और बिलाल को अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं. सैलरी जो है हम इधर अहमद को दे रहे हैं क्योंकि अहमद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम अहमद को सैलरी दे रहे हैं. फिर हमने बेसिकली ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हम ये इसमें से प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे. सो प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी. सो बेसिकली जब हम ये माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर देंगे, तो ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसको हम कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट. रेजिडुअल प्रॉफिट. अब रेजिडुअल प्रॉफिट जो है इफ इट इज शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लेट्स से 3:2, तो इसका मतलब 3 पार्ट्स जो हैं प्रॉफिट के वो अहमद को मिलेंगे और 2 पार्ट्स बिलाल को मिलेंगे. और लेट्स से रेजिडुअल प्रॉफिट इज 10,000, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो फिर 6,000 हमारा अहमद का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा और 2,000 जो है वो 4,000 बिलाल का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा. सो बिलाल का प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. इस तरह से इन लोगों का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लेंगे.
फिर इन्होंने हमें फिर हम पार्टनरशिप का करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनरशिप का करंट अकाउंट की जो रूल्स हैं, so the rules for current account are just like capital account. So rules for current account are just like capital account. So rules for current account are just like capital account. और कैपिटल अकाउंट जैसे क्रेडिट पे बढ़ता है और डेबिट पे कम होता है, करंट अकाउंट भी क्रेडिट पे इंक्रीज होता है, डेबिट पे डिक्रीज होता है। और हमारे पास पार्टनरशिप्स के केस में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है, कैपिटल अकाउंट स्टेज फिक्स्ड। So I will tell you what all is put into the capital account, but capital account stays fixed। जो सारे प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो सब पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, वो सब हम उनके पार्टनरशिप के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर करंट अकाउंट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट। हो सकता है, सही है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हो सकता है देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट जब पार्टनर के टोटल प्रॉफिट शेयर से ज़्यादा पार्टनर अगर विड्रॉ कर ले, तो दैट विल रिजल्ट इन अ debit balance on the current account of the partner. तो नॉर्मल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंस पार्टनर्स को दिया जाता है तो वो भी हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी पार्टनर को दी जाती है तो वो भी हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट शेयर्स भी हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। और ड्राइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स पैसे निकाल रहे होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस से, सो दैट विल रिड्यूस देयर कैपिटल, तो उसको हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर्स को चार्ज की जाती है, उनके कैपिटल से निकाल के बेसिकली प्रॉफिट में ऐड की जाती है, तो इसको भी हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। और सैलरी, अच्छा, ये जो सैलरी है, दिस सैलरी इज सैलरी अलॉटमेंट। मतलब हम पार्टनर को सैलरी देंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम सैलरी का लिखते हैं तो दैट्स लाइक हम पार्टनर को प्रॉफिट्स में से सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हम पार्टनर को पे नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पे करें, हम उसका कैपिटल बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है, इससे पार्टनर की इस सैलरी से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन अगर पार्टनर सैलरी निकाल ले बिजनेस से, मतलब उसी साल उसको सैलरी दी गई और उसी साल उसने पैसे निकाल भी लिए सैलरी के, तो उसको हमें डेबिट साइड पे भी लिखना पड़ेगा करंट अकाउंट के, बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ हिज कैपिटल एनी मोर ना। मतलब उसको हमने सैलरी अलॉट की और उसने वो सैलरी के पैसे निकाल भी लिए, तो दैट विल रिजल्ट इन लाइक इट विल बी लाइक सैलरी से पैसे आपने करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड पे आपने सैलरी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दिया, लाइक पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर दिया उससे। लेकिन अगर पार्टनर सैलरी निकाल लेता है बिजनेस से, तो अगेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एनीमोर, सो यू आल्सो हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, होता ये है कि अगर हमने लोन पार्टनर ने पार्टनरशिप बिजनेस को दिया है ना, तो उसका इंटरेस्ट, उसकी डबल एंट्री होती है। अगर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो वी विल डू इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट डेबिट, ये डेबिट होगा लोन इंटरेस्ट का अकाउंट, क्योंकि लोन इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। एंड बैंक क्रेडिट होगा अगर हमने पे कर दिया है, सही है, तो बैंक क्रेडिट होगा। अच्छा, DR stands for debit record, CR stands for credit record, and this is basically a journal entry that I am just making. So this is a journal entry. तो इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे डिटेल्स में बैंक लिखेंगे लोन इंटरेस्ट के अकाउंट के अंदर, और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे बैंक के अंदर लिखेंगे लोन इंटरेस्ट। तो ये तो नॉर्मल डबल एंट्री हो गई अगर हमने लोन इंटरेस्ट पार्टनर से लोन लिया है और उसको पे भी कर दिया इंटरेस्ट। अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है तो पार्टनर से हमने, पार्टनरशिप बिजनेस ने लोन लिया है, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, लाइक इनकर किया इंटरेस्ट लेकिन पे नहीं किया। इसका ये मतलब होता है कि हमने उसको लोन को इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस लोन का पूरा इंटरेस्ट जो है वो ओएंगे, वी हैवंट पेड इट, राइट। तो उसका हमारी डबल एंट्री होगी लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एंड द करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि लोन इंटरेस्ट हमें देना तो है, लेकिन हम उसको देने की जगह, लाइक आई मीन हम पैसे बैंक से उसको देने की जगह हम उसको उसके कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो हम उसको जो है वो क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि ये पार्टनर का लोन था, इसीलिए पार्टनर का कैपिटल बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट के अमाउंट्स के साथ, क्योंकि हमने इंटरेस्ट इनकर किया है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस इसका पे नहीं किया है, पार्टनर के दिए हुए लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस पे नहीं किया है, तो हम उसका सिर्फ हम उसका कैपिटल बढ़ा रहे हैं उससे, सही, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से। अच्छा, फिर हमारे पास प्रॉफिट शेयर्स विल आल्सो इंक्रीज
पार्टनर्स कैपिटल, तो हम उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करें। अगर लॉस शेयर्स होंगे तो वो डेबिट पाएंगे। सो इफ देयर इज अ शेयर ऑफ लॉस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स, तो इसको हम डेबिट पे लिखेंगे, लॉस शेयर्स। लेकिन वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन लॉस अगर होगा, पार्टनरशिप में लॉस होगा, तो उसके जो लॉस शेयर्स हैं आपको डेबिट पे लिखने पड़ेंगे। फिर हम बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर देंगे इसका, और फिर वो बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। तो पार्टनर का जो current account में ये current account का like it's like the format that includes everything for the current account. अच्छा, इसमें एक important चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए is the capital account of the partnership. So capital account, similar to a sole trader, each member of the partnership business has their own capital account in the nominal ledger. These usually record permanent increases or decreases in capital invested by individual partner. तो अगर partner additional capital लेके आए, additional capital during the year और capital invest कर रहा है, only this is going to be recorded in the capital account. So only additional capital या only permanent increase in capital or decrease in capital is recorded in the capital account. These are fixed capital accounts. So a capital account has a credit balance as the business owes to the partner. Yes, हर केस में capital account का credit balance ही होता है. अच्छा, current account, each member of a partnership or business also has a current account. Anything which the partner becomes entitled to, such as interest on capital, interest on loan, partner's salary, and the profit share is credited to this account. Anything which the partner is charged with, such as drawings and interest on drawings, is debited to this account. And मैंने आपको explain किया है कि current account में और क्या क्या आता है. A credit balance on the current account represents the amount owed to the partner. So business जो है वो partner को owe करता है. And a debit balance represents the amount owed by the partner to the business if a partner's drawings are more than his total share of profit. तो ये important है theory के लिए कि अगर partner के current account में debit balance क्यों होता है. So yeah, that is one of the important questions for theory. So if a partner's drawings are more than his total share of profit, the current account will have a debit balance as the partner owes this to the business. So if a partner's drawings are less than his or her total share of profit, the current account will have a credit balance as the business owes this to the partner. If current accounts are not maintained, interest on capital, partners' salaries, profit shares, drawings and interest drawings are recorded in the capital account. लेकिन ऐसा होता नहीं है. हम लोग के CIE के केस में we have current accounts are maintained and capital accounts are kept fixed. Say a drawings accounts, a drawing account is maintained for each partner. The total of this account is transferred to the partner's current account at the end of the year, which is also true क्योंकि drawings की जो drawings account है वो current account में end of year में transfer हो जाएगा. So that's it for this video. I hope this helps you because this is important for the basics of partnership. अच्छा, इसमें हमने क्या क्या कवर किया है, हमने पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया हुआ है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप्स किया हुआ है, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड लोन की ट्रीटमेंट कैसे होती है. तो लोन अगर हमने पे कर दिया होता है तो लोन का इंटरेस्ट अगर हमने पे कर दिया होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक का अकाउंट क्रेडिट करते हैं. अगर इंटरेस्ट जो है वो हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है पार्टनर को और इनकर ज़रूर किया है इंटरेस्ट, तो हम उसके पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.